Hello and welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers because Usha inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because Usha inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है. ये एक कोशिश है. दिस इज एन एफर्ट सो एज टू improve on your self confidence, on your self development. Before we start with today's topic, friends, I appeal to all of you, if you love this series, please like, share and subscribe as it motivates me to create more such content. So welcome back, friends. We begin with today's topic. Today's topic is purpose over popularity. So, your quiet companion on the journey of self growth, self awareness, and inner strength is the Golden Whisper series. And today's whisper is powerful one. A reminder in a world full of noise. Purpose over popularity. It's a phrase you may have heard, but when you truly live by it, your life transforms. सी हम लोग हमेशा पॉपुलैरिटी के पीछे भागते रहते हैं. उसने मेरी रिएक्शन का तुम्हारा क्या कहना है, अच्छा लगा ना, मैंने जो किया वो तुमको अच्छा लगा ना, व्हाट इज ऑल दिस थिंग गोइंग ऑन, आर वी टॉकिंग ऑन अवर पर्पस? नो, वी वांट अप्रिसिएशन ऑन ऑफ व्हाट वी हैव डन इमीडिएटली, तात्काल चाहिए. वो पॉपुलैरिटी के पीछे हम भाग रहे हैं. बट वॉज इट अवर पर्पस? वी आर नेवर गिवन द थॉट ऑफ इट. सो अगर हम इस पे पर्पस पे चलने लगे तो हमारा लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म होने वाला है. सो लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इट मींस, व्हाई इट मैटर्स, एंड हाउ दिस सिंगल चॉइस कैन रिबिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द इनसाइड आउट. मन से आपको लगना चाहिए, मन से आपको लगना चाहिए कि मुझे चेंज होना है, मन से लगना चाहिए कि मुझे ये काम करना चाहिए, पर्पस होना चाहिए. So, what is purpose over popularity? Purpose over popularity is a choice to live by your inner values rather than chasing external approval. है ना? अभी मैंने कहा कि हम लोग कुछ काम करने के बाद हम पूछते हैं कैसा कैसा लगा तुमको, अच्छा लगा कि नहीं लगा, हाउ डू यू फील, हाउ डिड आई वर्क. यू सी दैट एप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड, नो डाउट. बट ये जो आप करते हो, जैसे हम लोग आमतौर से पूछते भी हैं, टू टेक अ फीडबैक इज अ डिफरेंट थिंग. But here we require or we are seeking popularity. मैं पॉपुलर, उससे अच्छा था कि मेरा, इससे अच्छा था कि मेरा. What is that? That is comparative analysis. So it means choosing what's right for you, even when it's not what the crowd approves of. That is what you should concentrate on. लोग क्या कहते हैं उससे अच्छा आपने सही पर्पस डिलीवर किया कि नहीं, that is important. So there are too many factors into it. So even when it's not fashionable, even when it's not liked, yet you should be sure that you have worked on your purpose and the delivery was excellent. That is what you should have the confidence of. So let's be very clear. There is nothing wrong in being liked or admired. No, not at all. मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं कर रहे हो. But when that becomes the goal, you lose the connection with yourself. That is the concern. हमारा concern है self development, हमारा concern है enhancement of self confidence. अगर हम अपना गोल ही शिफ्ट कर दे towards people, liking of people, towards comparative analysis with others, then we are making a mistake because we are shifting our goal. That is not acceptable because it is not going to give you the expected results for you. Future vision that is going to get affected because purpose is rooted in meaning. क्या कहना है आपको, that is important. Its values, in integrity, it is deeply personal and often invisible to others. जिस पर्पस से आपने शुरुआत की है, हमेशा आप पूछते हैं ना क्यों किया तुमने ऐसा. सो व्हाट इज द पर्पस वी आर आस्किंग, है ना. भले झगड़ा हो या कुछ अच्छा काम किया हो या ऐसा, लेकिन ये जो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कौन पूछेगा, हमें अपने मन को ही सामने रखना है. Why have I done this? That's the purpose, you understand. Popularity in contrast is public.
तो लोगों पे डिपेंडेंट रहता है. इट इज बिल्ट ऑन परसेप्शन, अप्लॉज एंड रिकॉग्निशन. यू सी, हाउ डू दे परसीव यू डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्शन. सो पर्पस इज डिपेंडेंट ऑन योर इंटरनल वैल्यूज and popularity depends on external values. So that is what the basic difference is, because purpose lasts for a long period. It has got ripple effects, but the other thing, that is the popularity, it fades away. जैसे खत्म हो गई वो क्या कन्वेंशन खत्म हो गया, या जो आपने प्रेजेंटेशन देना था वो खत्म हो गया, तो बस लोग चले गए, आप चले गए, उनका खत्म हो जाता, बिकॉज दैट इज नॉट लास्टिंग एट ऑल. Popularity never lasts. So when you are deliver with purpose, it lasts long. आप भी खुश होते हो, लोगों के दिमाग और दिल पे भी छप जाता है सब कुछ. And when you are faced with a choice, purpose asks, is this true to who I am? आप सही में हो, ये सिर्फ आप जानते हो. तो आपका मन ही आपको पूछेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं. अब ये आपको किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पॉपुलरिटी विल आस्क, विल अदर्स अप्रूव ऑफ दिस. दैट इज व्हाट पॉपुलरिटी सेज. मैंने अपना जो डिलीवर करना था वो मन से किया, देन दैट इज द सेटिस्फैक्शन. दिल छू जाएगा. बट पॉपुलरिटी वो अप्रूव होगा क्या, लोगों को कैसा लगेगा, उस पहले वाले ने अच्छा किया था क्या. नाउ इट्स इन द डाउट्स. So when you choose purpose, you choose truth, what you are, वही तो के दे रहे हो आप. Even if not the loudest voice in the room, भले ही वो loudest voice मतलब inner voice आपका सुनाई सबको नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी लोगों को वो कंसर्न समझ में आने में टाइम लग रहा है, हो सकता है. बट सब्जेक्ट अगर डिलीवर मन से करोगे तो समझ जरूर आ जाएगा. पर्पस होना चाहिए. The meaning means the walking the path less followed is the purpose. To choose purpose over popularity is to take the path less followed. बाकी सब लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए क्या करते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम कार्यक्रम इसके लिए जाते हैं कि हम कुछ सीख क्या है, लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए किया गया कार्यक्रम वो ज्यादा देर दिमाग में नहीं रहता है, बिकॉज इट इज फॉर अप्रूवल ऑफ द क्राउड. Purpose is for approval of your mind. It means you are okay being misunderstood. है ना. जब पॉपुलैरिटी के लिए किया जाता है तो यार ठीक है, अगर कुछ लोग नहीं बोले तो ठीक है, क्या बोल सकता हूँ. Now you had the purpose to deliver that particular whatever you wanted to state. तो दिल से होना चाहिए, तो दिल से दिल कनेक्ट हो जाता है. अगर पर्पस नहीं रहेगा तो लोग सिर्फ देखते हैं और निकल जाते हैं. पर्पस रहेगा तो लोग साथ में लेके जाते हैं. सो यू आर ओके नॉट बीइंग इन द स्पॉटलाइट. यू आर ओके वॉकिंग स्लोली बट इंटेंशनली. सो इमेजिन दिस, एवरीवन इज चेजिंग अ ट्रेंड, but your heart whispers a different direction. That's the purpose calling. Your heart is saying something differently. That is the purpose you should understand. You could follow the crowd, ट्रेंड के साथ जा रहे हो, and maybe feel accepted for a while. कुछ देर आपको लगे हाँ हाँ सब लोगों ने मुझे अच्छा बोला तो they are with me. Or you could follow your calling and be fulfilled for life. अगर आप अपने दिल से कुछ कर रहे हो तो आपको फिर से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. You will be in the winning situation only. You may not receive applause right away. तुरंत सब लोगों ने अपलॉड करना, it was not expected when you are delivering with purpose. But what you will receive is peace, clarity. दिल में साफ है, मेंटल में क्लियर है, and a quiet pride in who you are. You will feel that. Sometimes purpose looks like turning down a shortcut. It sometimes is saying no when everyone else says yes. कभी कभी ऐसा लगता है सभी लोग ना बोल रहे, मैं तो हाँ बोल रहा हूँ, सही जाएगा क्या? तो हम अपने बारे में किसी और को पूछने लग जाते हैं. Don't do that, friends. Never ask in life what you want, wish to be of your life, or what you want to be in your life. It is your decision. It's your life. Otherwise, you are handing over your life to someone else. किसी और के
तरीके से या किसी और के दिमाग से आपका लाइफ चलने लगेगा अगर आप किसी और को पूछते होगे मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर क्या करना चाहिए आपने डिसाइड किया है तो कैसे करना चाहिए पाथ मिल जाएगा। बट डोंट आस्क एवरीबडी what you wish to do in your life. So sometimes it's starting small, starting steady, being steady all the way. It is necessity. But each of these steps is aligned, intentional, and true to your mind. अपने दिल पे हाथ रख के जब आप कहोगे तो दिल से निकली बात थी तो सच्ची ही होगी, होनी ही चाहिए। Now the effect it will have on your life is how it will develop your self confidence is when you consistently choose purpose over popularity, your self confidence begin to shift. It becomes quieter but stronger. है ना, झगड़ा होने लगे जैसे मान लो कि जिंदगी में किसी से झगड़ा हो रहा है तब आप एकदम कंपोज हो जाओगे बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द फैक्चुअल्स, यू आर अवेयर ऑफ योरसेल्फ, सिंस यू आर building the confidence, you are becoming stronger because दिल से कर रहे हो। Now instead of relying on compliments to feel worthy, you begin trusting yourself. You begin liking yourself without needing others to say first. अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी होता है। सो किसी और के अप्रूवल के लिए आपकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, पर आपने करना चालू किया अपने आप में से प्यार। नाउ यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ, यू नो व्हाट यू स्टैंड फॉर, दैट इज क्लियर। क्या करना चाहते हो, कि व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट आर योर प्रिंसिपल्स, व्हाट आर योर थॉट्स, यस यू आर स्टैंडिंग फॉर दोज। यू नो व्हाट ड्राइव्स यू, आपको किस वजह से आपको ड्राइव होते हो, मतलब यू गेट, आप बोलते हैं ना कि मुझे किक मिल गई और मैंने काम करना चालू कर दिया। किक वर्ड इज यूज्ड इन दिस लैंग्वेजेस। सो दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग यू, फोर्स ऑफ योर माइंड, ऑफ योर लाइफ, एंड दैट बिकम्स योर फाउंडेशन। अगर आप सही तरीके से अपनी दिल की आवाज सुन रहे हो तो वो आपकी बेस बन जाती है। यू बिकम मोर फोकस्ड, यू स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। इसको भी खुश रखना है, उसको भी हाँ बोलना है, उसको भी हाँ बोलना है। डोंट डू सच थिंग्स। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड, आई कैन नॉट प्लीज एवरीवन। I have to first understand what I have to focus on. That is what you should carry forward on. You stop fearing criticism. जब अपने दिल से करने लगोगे अब आपको क्रिटिसिज्म से डर नहीं लगेगा, because now you are prepared for the answers. You are no longer performing for the crowd. That is one of the basic reasons. ये shift of mindset कब हो गया आपको भी पता नहीं चला. That is development. So you are walking your path for your reasons with your own rhythm, and that's the powerful part of your life. That is a shifting part of your life. That is the changes you have brought in yourself, which are necessity for successful life. So you also can begin to experience more genuine relationship हो रहे हैं। आपको ऐसे लगने लगेगा कि पहले जो रिलेशनशिप हमारे थे वो काफी सुपरफिशियल थे, लेकिन अब जब पर्पस सामने आ गया तो नाउ आई अंडरस्टैंड what I require and where I should be. So when you live with purpose, you attract people who resonate with your authenticity. लोगों को आपकी सच्चाई दिखने लगती है और वो आपके साथ चलने लगते हैं। You don't have to pretend anymore. You don't have to filter yourself to be accepted. It is not required now. Because जो है वो दिल के से है और दिल से खुलाम बात करते हैं ना, जो दिमाग में है वही मुंह जुबान पे है। ये कॉमन डायलॉग हम सुनते ही है। मैं मन में कुछ अलग बातें नहीं रखता हूँ, ये भी डायलॉग हम सुनते हैं। व्हाट इज दैट? That is what you are explaining of your clarity. But once you start acting on purpose, not seeking of popularity, your inner shift has automatically taken the stage by force of development. So you show up as you are, and others feel safe to do the same. That's how connection deepens. That's how confidence becomes contagious. जब लोग देखेंगे आपकी तरफ तो लोग बोलेंगे नहीं इसकी तरह होना चाहिए. That is what I mean to say, that it becomes a contagious. So quite the power for the purpose
The close is it is to the gentle truth. शांति से काम करना. Let your work speak. Let your success speak. Why is it required that you every now and then seeking popularity or seeking nod for your actions from anybody? Being popular is pleasant, अच्छा लगता है. But being purposeful is powerful. It defines you. It takes your confidence to next level. Popularity fades, purpose stays, and it enhances. It's like ripple effect. When you choose to live with purpose, you stop performing. You start aligning with others. That is what I mean to say, that the relationship will develop. You stop chasing applause. You start listening to your own applause inside your soul. You stop measuring success by now. Many people clap for you and start measuring by how true you are to yourself. Now that is what is getting projected. वही वही जो आप चाहते थे वो हो रहा है, लेकिन आपका इसका रिजल्ट थोड़ी देर बाद मिलने वाला है. So don't be afraid to walk a quieter path. Don't be afraid to choose what feels right, even when it's not popular. Popularity की तरफ मत जाइए. Do what is right. Live by your values. This will help you to create even your values also. अगर अभी तक आपने सोचा नहीं है तो ऐसे do the things which is right, and now you are transforming yourself. You are now preparing your own set of values. Speak the truth. Stand tall in your purpose. That's what the real self-confidence is born. When you speak the truth and stand tall with self-purposes, with purpose, the self-confidence is born. That's where self-development begins. And that is how you start aging gracefully also, not just in years, but in wisdom. So friends, I sign off on this note and we meet again in another episode of Golden Whispers, because Vikas inspires aspirations. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.